शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और ये मेरी पहली अनबॉक्सिंग वीडियो है तो पता नहीं कैसी बनेगी। सो लेट्स ओपन करते हैं। ये मुझे अमेजोन से रिसीव हुआ है जस्ट अ डे बिफोर क्रिसमस। लेट्स ओपन इट। ये सो दिस इज द पैकेट। So this is Insta360 1x2 Creators Kit. See. Now let's open this packet and let's first see what are the features. So I will get a 360 camera, lens cap, premium lens guard, micro SD card for 64 GB, invisible selfie stick, bullet time handle, charging cable and an invisible mic shoe along with a quick start guide. So let's open it. Packaging is first class. Now see how to open it. Okay, so this is the main packet. This is a camera, I can see it, and this is camera screen. Let's remove this guard, and these are the packets. So first one is this selfie stick that can be extended up to 3 meters, and it looks good. It is simply extend and rotate to lock. So this is the length of the selfie stick, and it is invisible selfie stick. So just rotate it back and you can slide it out. Okay, so this is the first accessory I have received. Second accessory is this tripod come bullet time handle. So in this bullet time handle, what you need to do, you need to attach your camera here and then rotate it. Okay, so you need to rotate that camera like this to get a 360-degree view. We'll explore it later. Right now, just put this case, and you can also mount your camera directly on this quarter-inch mount using this screw to get the tripod. So this is second accessory. Now comes the third one. So let's open it, see what is it. So this is basically lens guard that will protect your lens from damage. Actually, I will show you the camera first. So this is the camera. Let's see its size. It is something, it's small, and it shoots in 5.7K 360-degree value in 30 FPS. So you can mount this lens guard directly over this camera to protect these bulging lens so that they are not damaged while keeping in some hard surface. So right now I will be keeping it on this. Okay, now let's go to another one. So another accessory is this lens cap. This is similar to protecting this, but since you cannot mount this lens guard always, so it's easy to just mount this lens pocket so that it is protected. It fits perfectly, so it is not loose. That's a good thing.
Another thing is this mic adapter where you can connect your Bluetooth mic. So this I will not be using because this camera itself is having 4 mics to capture 360-degree sound. Now another thing. So this is the pouch, carry pouch, where I can keep my camera. It is also perfectly fit, so it will not be lost somewhere. And other things which I get in this box are the stickers, cleaning cloth, some booklet which I am not going to read. This also is of no use. This is one Bluetooth adapter, mic adapter. This is 64 GB memory card, Insta360. So this is the complete package. And one more thing, there is one USB Type-C charging cable, which I will not be using since I already have one cable. So I will keep it as a spare one. So let's turn on the camera and then see how it goes. So this camera is basically very rugged look, and we'll be removing this safety pill. Okay. Now see, this is completely waterproof, so you can pull off these pins to remove this battery, which is around 15 mAh and gives camera life of around 80 minutes. So I will insert the SD card here. So see here, after removing the battery, you need to insert this SD card. So आपके पास ये है आपका Insta360 कैमरा जो आपको इस पैकेट के साथ आता है, और इसमें आपको 2 लेंस मिलते हैं। टू सुपर वाइड लेंस है जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल शूट करते हैं, और इनकी कंबाइंड इमेज से आपकी 360 डिग्री की इमेज बनती है। इसके साथ ही आपको एक टच स्क्रीन मिलती है जिससे आप बेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं, और 2 बटन मिलते हैं। फर्स्ट इज पावर बटन एंड दिस इज स्टार्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन। सो इसके अलावा आपको यहाँ पे एक Type-C चार्जिंग पॉइंट मिलता है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो इसका कवर है ये बड़ी आराम से निकल जाता है, तो इसको संभाल के चार्ज करना कि ये लूज़ ना हो, नहीं तो आपकी वाटर प्रूफिंग ख़राब हो सकती है। तो फिलहाल इसको बंद करते हैं और देखते हैं इस कैमरे का बूट टाइम कितना है। तो इसमें 2 मोड हैं। फर्स्ट कि आप इसको क्विक स्टार्ट बटन है जिसमें आपको सीधे स्टार्ट रिकॉर्डिंग का बटन दबाना है, एंड ये तुरंत स्टार्ट कर देगा रिकॉर्डिंग करना। तो जैसे आप स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये स्टॉप करके कैमरे को बंद कर देगा। दूसरा मोड है इसको पावर ऑन करने का, तो आप पावर वाला बटन इसको प्रेस करेंगे और ये आपका ऑन हो जाएगा। तो बूट टाइम बहुत कम है, 2 से 3 सेकंड का। इसके बाद आप रिकॉर्डिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो ये कैमरा है इसका मैं यूज़ करूँगा कम 1-2 हफ्ते, फिर उसके बाद आपको सैम्पल्स और इसका जो फाइनल रिव्यू है वो आपको प्रेजेंट करूँगा। तो तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन आती रहे। तो ये मेरा पहला अनबॉक्सिंग वीडियो था, तो इसलिए देखिए कैसा बना है।